2.2. Question 4 and part 1 जो हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। अच्छा हम क्योंकि यहाँ पे ओमेगा इन्वॉल्व है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हम इसको बराबर कर सकते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। अच्छा तो इसको ये हमारे पास चूंकि लेट्स टेक राइट हैंड साइड which is x minus y into x minus omega into x omega square into y। इसको नहीं छेड़ते पहले। अच्छा ये हमारे पास x माइनस ओमेगा और ये है x minus omega square and minus omega square is equal to 1 plus omega। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा इंटू वाई एक्चुअली एंड x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इंटू प्लस ओमेगा वाई। अच्छा इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें आपस में x माइनस वाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और बी गेटिंग एक्स स्क्वायर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और बी गेटिंग एक्स प्लस वाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और बी गेटिंग ओमेगा एक्स वाई। अच्छा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और बी गेटिंग माइनस एक्स वाई ओमेगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और बी गेटिंग माइनस ओमेगा वाई स्क्वायर और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं सो आई शुड बी गेटिंग minus omega square to y square। अच्छा x minus y it is x square plus xy। इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता मज़ीद। अच्छा अगर आप यहाँ पे देख लें दिस इज प्लस ओमेगा एक्स वाई नेगेटिव ओमेगा ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास वाई स्क्वायर है एक्चुअली। तो अगर मैं वाई स्क्वायर को ले लूँ कॉमन पॉजिटिव नेगेटिव वाई स्क्वायर को अगर मैं ले लूँ तो आई वुड बी गेटिंग ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो x minus omega x square plus xy and then minus y। अच्छा omega plus omega square plus 1 is equal to 0 so omega plus omega square equal to minus 1। this is minus 1 actually x minus omega x square plus xy and this positive y square so actually I'm getting x cube minus y cube which is equal to the left hand side। Now let's get to the question 4.2। अच्छा the part 2 is 1 plus omega 1 plus omega square then there is 1 plus omega 4 and then there is 1 plus omega 8 actually equal to 1। अच्छा 1 plus omega 1 plus omega square and then 1 plus omega 4 1 plus omega 8। अच्छा इस फर्स्ट टर्म को नहीं छेड़ते पहले इसको ऐसे ही रहने दें पहले स्क्वायर वाले टर्म को और क्यूबिक वाले टर्म को
सॉल्व कर दें। 1 प्लस ओमेगा, इस इसको मैं लिख सकता हूँ एज -1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर के। देन देयर इज 1 प्लस, और मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 6 के। 1 प्लस ओमेगा, अच्छा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज बराबर है 1 प्लस ओमेगा के। ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, so would be only left with omega। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा, ये नेगेटिव 1 नेगेटिव ओमेगा। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा है, ये मेरे पास रह जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 के बराबर है। सो 1 प्लस ओमेगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो I would be left here with only negative omega, and here 1 plus omega। अच्छा, 1 plus omega square, इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेटिव ओमेगा इंटू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप इसको ले लें, मेरे पास आ रहा है 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर इंटू नेगेटिव ओमेगा, और -1 और नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर बराबर है 1 प्लस ओमेगा के। तो 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर इंटू नेगेटिव ओमेगा, 1 नेगेटिव 1 इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो नेगेटिव ओमेगा। तो एक्चुअली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू नेगेटिव ओमेगा ये कैंसिल हो जाएगा, सो आई वुड बी लेफ्ट विद ओनली ओमेगा है। अच्छा, सो 1 plus omega whole square, then there is positive omega square, and okay, so let's solve this. It's formula 1 a square, अच्छा, a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab, and here let's a is equal to 1 and b is equal to omega, so it is actually a square plus b square plus 2 into a into b omega square. So 1 plus omega square plus 2 omega into omega square। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें on either side, omega square, and then I would be getting omega 4, and here I would be getting 2 omega cube actually। तो ओमेगा स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एक्चुअली। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, so I would be left with only ओमेगा, एंड देन देयर इज प्लस 2। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के बराबर है, so -1 plus 2, actually we are getting +1, which is right hand side actually। So that's was the final part of the final question.